हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रिपरेशन। आज का वीडियो लेक्चर है हमारा BEGLA-135 इंग्लिश इन डेली लाइफ BA का सब्जेक्ट है ये। सो क्वेश्चन आज का हमारा है, इमेजिन यू आर अ फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज. यू आर स्टैंडिंग फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेजिडेंट इन द स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन. गिव अ स्पीच इन अबाउट 300 words projecting your leadership qualities, your desire for service, and your understanding of students' problem. Why would you be better than other candidate? सो ये एक स्पीच है, यहाँ पे हमें स्पीच लिखनी है। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग लिखेंगे, किस चीज़ पे आपको स्पीच लिखनी है। बोल्ड लेटर्स में लिखना है ये स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन। इसमें आपको बताना है कि आप किस लिए इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या आपने फ्यूचर के लिए प्लान किया हुआ है अगर आप इस पोस्ट पे आ जाते हैं, किस तरीके से आप स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ये सब लिखना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको ग्रीटिंग देना है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ the professor and students. As you all are aware that I am standing for the post of president in the students union election. So सबसे पहले आपको इंट्रो देना है, उसके बाद आपको बताना है I respect about what the union president can do for this college. कुछ बातें आपको प्रीवियस प्रेसिडेंट की भी बता देनी है। आई एम फ्रेंडली पर्सन, अपनी क्वालिटीज़ बतानी है। विच हेल्प्स टू अंडरस्टैंड टू स्टूडेंट्स प्रॉब्लम। आई एम फ्रेंडली पर्सन विच हेल्प्स टू अंडरस्टैंड टू स्टूडेंट्स प्रॉब्लम। अपनी क्वालिटीज़ बतानी है कि लोग आपको, मतलब स्टूडेंट्स आपको किस लिए चूज़ करें इस पोस्ट के लिए। एंड टेक आवर यूनियन फॉरवर्ड। नाउ आई एम ऑनर्ड टू स्टैंड हियर and would like to express long term wishes. अपनी लॉन्ग टर्म विशेस के बारे में बताना है कि अगर आप इस पोस्ट को पा लेते हैं तो उसके बाद आप क्या करेंगे। आई वॉन्ट टू विन फॉर स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन. If you elect me to be your president in this election, there are several things in my mind. आपको बताना है आपने क्या क्या सोचा हुआ है अगर आपके पोस्ट मिल जाती है। I will do to ensure that your requirements are met day in day out. आपको ये 300 words में लिखना है पूरा स्पीच। Across in the college, here I promise that I will make every effort to complete the college leaders
the college leaders and students of this college to become a modern, क्या क्या चेंजेस लाने के लिए आप क्या क्या करेंगे वो बताना है आपको. एक्टिव ग्रुप ऑफ द कॉलेज असिस्टेंट and students union organization आपको बताना है कि आप करंट में क्या कर रहे हैं, क्यों आप पे लोग ट्रस्ट करें. आई हैव ऑलरेडी बीन वर्किंग इन डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर youth league that will valuable time for nearly a year from work. बताना है आपको कितना टाइम हो गया है उस काम से जुड़े हुए और आपने क्या क्या सीखा है, क्या क्या चीज़ें आपके एक्सपीरियंस है जो आप अगर प्रेसिडेंट बन जाते हैं वो यूज़ करेंगे. सो आई लर्न हाउ टू इंटरेक्ट विद अदर्स, हाउ टू लर्न पेशेंस, हाउ टू सॉल्व conflicts, how to discipline and coordinate the relationship between other departments में किस तरीके से रिलेशनशिप डेवलप करना है. and how to move all power can be union, how to promote and apply the brain power of students, learn how to handle with the कॉन्ट्राडिक्शन को किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है. बिटवीन दी वर्क एंड टास्क. एट लास्ट अपनी बात को ख़त्म करते हुए आई वॉन्ट टू से दैट if I am qualify and became the union president. अगर आप यूनियन प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो आई वुड लाइक टू फर्दर इम्प्रूव, जिस तरीके का भी सिस्टम है आप उसको फर्दर इम्प्रूव करेंगे. एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स of the student union to further improve their work with full positive
attitude towards everything to further enhance the sense of responsibility, bold innovation at tasks with an open mind to learn from others। लास्ट में आपको थैंक यू लिखना है। आई होप आपको वीडियो वैल्यूएबल लग रहा होगा कंटेंट। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, आपका 20 मार्क्स का आता है। अगर आपको और इसी तरीके की वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए मुझे कि मैं इस तरीके का प्लेलिस्ट आगे बढ़ा पाऊँ। थैंक यू सो मच।